very fortunate devotees. It's very difficult to explain how important this decision is to be initiated first, and now you especially, second initiation. आप सब बहुत भाग्यशाली हो, क्योंकि ये बहुत ही गंभीर आपने निर्णय लिया है अपने जीवन में कि आप जो है, पहले तो आपने पहली दीक्षा ली और अब आप दूसरी दीक्षा ग्रहण कर रहे हैं. I pray that you will never stop chanting Hare Krishna or this wonderful Kama Gayatri mantra, your entire Gayatri, so that you'll be always protected to stay in Krishna consciousness, and you'll be able to do wonderful and significant things to spread this movement all over India, all over the world, in fact. So thank you very much. And I want to thank Rohini Priya Prabhu. He is a wonderful guru, a wonderful acharya teacher. And the fact that you're associating with him and other good devotees there means that you will also become good devotees and be able to spread this movement. Hare Krishna. तो महाराज जी कह रहे हैं कि उनकी प्रार्थना यह है कि आप जीवन भर जो है हमेशा आप हरे कृष्ण महामंत्र जाप करते रहें, और ये गायत्री मंत्र जो आपको मिला हुआ है आप पूर्ण जीवन भर इसका जाप करते रहें, और भक्तों के संगति में रहते हुए आप जो है इस मिशन का, प्रभुपाद जी का, ये जो हमारा मिशन है प्रभुपाद जी का, वो आप भारत भर में, आपके शहर में और विश्व भर में आप इसका प्रचार करें. Hare Krishna. Thank you very much. All glories to Srila Prabhupada. Hare Krishna, Guru Maharaj. Thank you, Roni Priya Prabhu. Thank you. आप में से कोई कुछ महाराज से कुछ कहना चाहता है तो 5 मिनट का समय है. महाराज उधर रात बहुत हो गई, थक भी गए महाराज जी, तो कोई कहना चाहता है तो आप कह सके. महाराज, I've asked if any one of them would like to express their thankfulness to you. हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम, मुझे बात करना है. Hare Krishna. Guru Maharaj, is Devnath Hari Prabhu there with you, or can I translate it for you? Yes, Prabhu, आप कर दीजिए, मैं anything works. Okay. हाँ, लीला विलासिनी माता जी, बोलिए आप. आपके चरणों में इस लीला विलासिनी राधिका दासी का दंड प्रणाम. रोनी प्रभु जी के मार्गदर्शन में और आपकी कृपा आशीर्वाद से मैं हमेशा स्पेशली बच्चों के लिए हमारे सनातन धर्म से जोड़ना चाहती हूँ. जो कुछ हमारे इस्कॉन औरंगाबाद में गोपाल फन स्कूल चलता है या फिर और कुछ एक्टिविटी चलती है बच्चों के लिए, उनके लिए स्पेशली कुछ काम करना चाहती हूँ. बस आपका आशीर्वाद हम मेरे साथ रहे, यही अभिलाषा है. बस. हरे कृष्ण गुरु महाराज. Guru Maharaj, this is Leela Vilasini Radhika Devi Dasi, and she is involved with the children's conducting program for children where they are taught the principles of Krishna consciousness for many years now, and she is praying at your lotus feet that you bless her, that she can contribute in this way to enliven the lives of the children of Aurangabad. There are 2 things that you can do. One is gain the respect of the parents of these children. Okay, Maharaj. Can I translate that, Maharaj? Yeah. महाराज कह रहे हैं कि आपको 2 चीज पर ध्यान रखना चाहिए और आपको करना चाहिए. एक, कि आपको इन जो बालक हैं उनके पालकों का, उनके पेरेंट्स का आपको रिस्पेक्ट प्राप्त करना चाहिए, उनका आदर प्राप्त करना चाहिए. Because Srila Prabhupada did not want Krishna conscious children to go to the materialist, mundane schools, the public schools, or whatever, the Catholic schools. He didn't want that.
महाराज जी कह रहे हैं कि शिला प्रभुपाद जी नहीं चाहते थे कि जो बच्चे हैं वो वर्तमान के जो पाठशालाएं हैं वहां पर जाकर जाएं, वो वहां पर वो शिक्षण ग्रहण करें. He wanted these kids to associate with genuine devotees like you and learn Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam, and also learn math or mathematics and English or whatever language they speak very well. Because if they're highly... Go ahead. प्रभुपाद जी चाहते थे कि ये बच्चे जो हैं आपके पास आकर शिक्षण ग्रहण करें कृष्ण भावना के बारे में और सिद्धांतों के बारे में, और अगर गणित है, मैथ्स है या कोई और भाषा है तो वो भी सीखें. He specifically said they should learn very good English and very good mathematics. श्रील प्रभुपाद जी विशेष करके चाहते थे कि बच्चे गणित, मैथ्स और इंग्लिश बहुत अच्छे से सीखें. And of course their native language. और जो आपकी मातृभाषा है वो भी अच्छे से सीखें. Because if a child is trained in math and English on a high level, they can pass any test. अगर कोई बच्चा गणित और अंग्रेजी भाषा बहुत अच्छे से सीख लेता है तो फिर वो किसी भी परीक्षा में अच्छे से उत्तीर्ण हो सकता है. Now, if you can develop your school to the point and gain the respect of the parents and educate these kids until they're 16 or older, that would be a big and wonderful service for Srila Prabhupada. अगर आप एक पाठशाला को इतना सुंदर तरह से तैयार कर उसे चलाएं जिससे कि ये बच्चे 16 साल की उम्र तक आयु तक वहां पर शिक्षण ग्रहण कर सके तो श्रील प्रभुपाद जी के चरणों में बहुत ही विशेष सेवा होगी. If you cannot teach them yourself English and math, it's possible to find other, perhaps devotees or even outside people to help teach them those two subjects. But you can definitely teach them Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam so that they become devotees. अगर आप गणित और अंग्रेजी स्वयं ना उनको पढ़ा सकें तो आप किसी और भक्त से या किसी अन्य भी शिक्षक से आप उन्हें ये ज्ञान, ये शिक्षण प्रदान करा सकते हैं, किंतु श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम जो है उसका ज्ञान आपको उन्हें जरूर सिखाना चाहिए. Now the question is, what is actually success in life? प्रश्न यह है कि जीवन में यश किसे कहते हैं? If you look at the Vedic history, the most successful people were, of course, Brahma, who was directly instructed by Krishna. Narada Muni, who was instructed only when he was 5 years old by 4 Bhakti Vedantas, 4 pure devotees. And he became the greatest saint in the history of the world. And also Prahlad Maharaj, he was instructed by Narada Muni while he was still in the womb of his mother. And he became one of the greatest kings that's ever ruled the world. And Dhruva Maharaj, he was only 5 years old, but he was convinced that he has to see Krishna. And he was blessed by Krishna with transcendental knowledge. These are the most successful people. They're not IT people, and they're not mundane scholars. But that is real success. Sorry, Guru Maharaj, I did not hear the last sentence. That these are the most successful people in the world. Thank you.
वैदिक इतिहास में सबसे यशस्वी लोग कौन है? सबसे पहले हम देखते हैं सर्वप्रथम ब्रह्मा जी है, जिनको साक्षात स्वयं भगवान कृष्ण ने ज्ञान दिया। तत्पश्चात नारद मुनि 5 वर्ष की उम्र में ही जो 4 भक्ति वेदांत साधु आए थे, उनसे उन्हें प्रशिक्षण प्राप्त हुआ। उसके बाद हम देखते हैं प्रहलाद महाराज, जिनको स्वयं माँ के गर्भ में ज्ञान प्राप्त हुआ और आगे चलकर बहुत ही यशस्वी राजा बने। और फिर ध्रुव महाराज, जो 5 वर्ष की उम्र में ही भगवान कृष्ण को ढूंढने निकल गए और उन्हें भगवत कृपा प्राप्त हुई। तो ये सबसे यशस्वी लोग, यशस्वी पुरुष हैं या यशस्वी व्यक्ति हैं, ना कि आईटी में, मतलब कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में, और ना ही किसी और क्षेत्र में। And the most successful women are the gopis. They're all women, but they know the 64 arts by which they can please Krishna. Radharani. Sorry, please continue. Radharani, to please Krishna, she knows over 16,000 ragas, so that she can express all the different types of love that she has for Krishna. Go ahead. सबसे यशस्वी जो माताएं, स्त्रियां हैं वैदिक इतिहास में, वो है गोपिकाएं। उन्हें सारे गोपिकाओं को 64 कला का ज्ञान था, जिससे कि वो भगवान कृष्ण के सेवा कर सके। और विशेष करके श्रीमती राधा रानी जी, एक उनके बारे में बात कही जाती कि उनको 16,000 राग आते हैं, जिससे कि भगवान कृष्ण को वो प्रसन्न कर सके। And then you have Devaki, and you have Yasoda Mai, and you have Shilavati, and you have so many women that were exceptional, the greatest women in the history of the world. They were all devotees. Not only they could please their husbands, but they were on the level of Brahma and Narada. They could rule the world also. They were exceptional people. इसी प्रकार से बहुत सारे और यशस्वी स्त्रियां हैं, जैसे कि माता देवकी हैं, यशोदा मैया है इत्यादि। ये इतने सुशील थे या इतने सद्गुणी थे कि ब्रह्मा जी के स्तर के इन्हें माना जा सकता है, या फिर इनमें इतनी क्षमता थी कि वो संपूर्ण विश्व पर राज भी कर सकते थे। So, if you can dedicate yourself and develop such a school where you don't only teach little kids, but you take them from their early age right up to the point where they become adults, you will do one of the greatest things in the history of India. तो अगर आप ऐसे कोई पाठशाला स्थापित करते हैं अपने लगन से, जहां पर बच्चों को जन्म से लेकर कौमार अवस्था तक उन्हें यह शिक्षा, वैदिक शिक्षा दिया जा सके, तो आप बहुत बड़ी सेवा करेंगे पूरे भारतवर्ष के लिए। And you can do it. You can do it. महाराज जी कह रहे हैं कि आप निश्चित रूप से कर सकती हैं। You just need a little bit of help and encouragement. And even if it's only 5 or 6 kids in the beginning, but you take them right up to their adulthood, with like 17, 18 years old, and train them in Krishna consciousness, Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam, math and English and their vernacular language. Let these kids become exceptional, like Kunti Devi, like all these great Vedic women and all these great Vedic men. That's what we need today. आप जो है थोड़े से मदद, अगर आपको सहायता मिल जाए और अगर आप बहुत प्रोत्साहित रहें, तो आप ऐसा कर पाएंगे, जहां पर आप इस प्रकार से जैसे कि कुंती महारानी इत्यादि जैसे बहुत ही यशस्वी स्त्री और यशस्वी पुरुषों को आप प्रशिक्षित कर पाएंगे, बचपन से लेकर जब तक कि वो 17-18 आयु के ना हो जाए। So I am praying that you can do this. तो हम प्रार्थना ये कर रहे हैं कि आप ऐसा करें। Hare Krishna.
थैंक यू सो मच गुरु महाराज, आपका इतना समय देने के लिए और इतना अच्छा मार्गदर्शन करने के लिए। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि आपका इतना अच्छा संग मुझे मिल रहा है और इतना अच्छा मार्गदर्शन मुझे मिला है। निश्चित रूप से मैं मेरा काम करने का और अच्छे से प्रयास करने का काम करूंगी। बस थैंक यू गुरु महाराज। Thank you so much, Guru Maharaj, for such wonderful guidance and so much giving us so much inspiration, especially me. And I would like to promise you that I will definitely dedicate myself to following your instructions and serving them. हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, मुझे भी बात करना है। Maharaj, do we have time for some more feedback? Yeah, that's okay. We're in no hurry here. Thank you, Maharaj. हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, बात कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, बात कीजिए। हरे कृष्णा गुरु महाराज, आपके चरण कमलों में मेरा दंडवत प्रणाम स्वीकार करें। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज, जून 2019 में जब आपका इनिशिएशन सेरेमनी चल रहा था, उस दौरान मैं पहली बार मैंने आपका लेक्चर, उस वक्त दीक्षा का जो लेक्चर है वो मैंने सुना था, और उसमें आपका एक अनुभव आप मंथन कर रहे थे, जिसमें आप कह रहे थे कि जब आप भारत यात्रा में आए और दिल्ली के रोड से जब आप गुजर रहे थे, तो आपका जो उस वक्त का जो सैफरॉन वेशभूषा था, तो एक व्यक्ति ने आपको इनवाइट किया घर पर, और आपको देखकर, आपका शेव हेड और आपका सैफरॉन और आपका हाथ में जो जपका माला है वह देखकर वो बहुत प्रसन्न हुए, और उन्होंने आपसे पूछा कि आप इस्कॉन से बिलोंग करते हो, और आपने कहा कि हाँ, और उन्होंने बहुत ही आत्मीयता से आपको घर बुलाया और आदरातिथ्य किया, और कृष्ण का जो प्रसाद है वो आपको उन्होंने दिया, और उसके बाद में उन्होंने भगवद गीता के ऊपर आपसे कुछ विचार विमर्श किया, आपसे कुछ उपदेश भी ग्रहण किया, और ऐसे करते समय जो है आप भी बहुत आनंदित हुए। और यह एक्सपीरियंस जब आप दीक्षा समारोह में आपके जो इनिशिएशन लेने वाले भक्तों के साथ में आप जब साझा कर रहे थे, तो उस वक्त वो एक्सपीरियंस कहते समय आप बार बार यह बता रहे थे कि जब हमारा जो वेशभूषा है और हमारा जो आचरण है, यह कृष्ण को रिप्रेजेंट करता है, और इसीलिए हमने हमेशा गंभीरता से भक्ति करना चाहिए। और उस दिन से गुरु महाराज, मैं जब भी मुझे समय मिलता तो मैं आपके प्रवचन सुनते आया हूँ, और मुझे आपके प्रवचन से हमेशा से प्रेरणा मिलती आई है, हमेशा से गंभीर बनने का मुझे जो है अंतःकरण से प्रेरणा मिलती आई है। और इसी प्रकार जो है आपका आश्रय और आपका जो ये अनमोल आपकी जो अमृतवाणी है, ये हमेशा भविष्य में भी हम सुन पाए और अपने जीवन में उसे उतार सके, बस हम आपके चरणों में यही प्रार्थना करते हैं गुरु महाराज। हरे कृष्णा। Guru Maharaj, this is Shyam Sevak Das, and he says that please accept my respects unto your lotus feet. He was listening to one of your programs online. This is from 2019 when you were giving initiations at our Samamish temple. And during the initiation ceremony, you were telling the devotees who were gathered there about your experience of visiting India as a young devotee. And you were wearing saffron clothes, and you had your bead bag and you're shaven headed, and you were invited by one gentleman, most probably in Delhi, to the house, who asked you if you are from ISKCON, and then he served you very nicely, and he had discussions about Krishna consciousness. And from that incident, you're asking the devotees at the temple to understand the principle of how important it is to know that we actually represent the Supreme Lord, and we represent something higher through our dress and through our behavior. And in this way, people are inspired. And you wanted the devotees to take that lesson from your experience. So since that day, Shyam Sevak Das, Shyam Sevak Prabhu, who has taken second initiation from you today, he has been listening to your lectures regularly and is very inspired to follow your instructions. Well, thank you very much, Shyam Sundar Prabhu. Thank you. Thanks so much. Yes, that gentleman. Hare Krishna. Prabhu, please mute yourself. Yes, Guru Maharaj, please continue. That gentleman was a total stranger. He didn't know who I was. But he asked me if I was from ISKCON.
And I said, yes. Immediately, he invited me to his house and treated me like a member of his family. And he also asked me to do pravachan. And he cooked a meal. He took a bath and he cooked a meal. He offered it to his deity, which is Radha Raman. And then he wanted to hear a class and then do kirtan. And then he served me prasadam. That was what I realized the most at that point, was that Prabhupada instructed us to be genuine Vaishnavas. And he knew that if we could take to this culture, although we're not born in this culture, but if we can accept this culture and perform, it would be a big, let's say, significant thing in the lives of the Hindus in India, because they're all trying to imitate Americans and American culture. And if they see Americans accepting their culture and practicing it in a pure way, that would be an electrifying experience for the Indians. That's why he brought us white elephants to India, to be able to give that example to the Indians so that they would stop running away from their culture and realize how valuable it is and how precious it is, and that they should practice it very sincerely. So it was an amazing realization for me. And it just shows the genius and the love that Prabhupada has for India, and not only India, the whole world. महाराज जी कह रहे हैं कि जो अभी बताया श्याम सेवक प्रभु ने कि किस प्रकार से महाराज जी जब भारत में थे बहुत पहले, कई वर्ष, बहुत दशक पूर्व, तो वहां पर उन्हें एक भारतीय व्यक्ति ने अपने घर में आमंत्रित किया, क्योंकि वो समझ गए कि ये इस्कॉन से हैं। इनकी वेशभूषा देखकर उनके लिए स्वयं उसने भोजन पकाया, फिर उसे भोग लगाकर, भोग दिखाकर महाराज जी को प्रसाद दिया। महाराज जी से प्रवचन देने का उन्होंने अनुरोध किया। तो महाराज जी को ये साक्षात्कार मिला कि अगर हम जो है इस संस्कृति को गहराई से स्वीकारते हैं, जो वैदिक संस्कृति उसे, और उसका अच्छे से हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं, उसका अच्छे से हम प्रस्तुतिकरण करते हैं, तो फिर प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि जो अमेरिकी या पाश्चात्य देश के जो नागरिक हैं, अगर वो इस संस्कृति को स्वीकारते हैं तो भारतीय लोगों के जीवन में बहुत ही महत्व रखेगा, क्योंकि भारतीय लोग जो हैं पाश्चात्य देश के नागरिकों की नकल करना चाहते हैं। और जब देखेंगे कि ये जो हैं, जिन्हें प्रभुपाद जी कहते थे कि इनके व्हाइट एलिफेंट्स हैं, सफेद हाथी हैं, जो कि बहुत ही आप जानते हैं सफेद हाथी का मतलब है कि जिसका बहुत मूल्य होता है, तो सफेद हाथी है। तो प्रभुपाद जी चाहते थे कि इनको देखकर जो भारतीय लोग हैं, भारतीय नागरिक हैं, जो अपनी संस्कृति को छोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, वो अपनी संस्कृति का महत्व समझें और उसे छोड़े ना, बल्कि उसको और गंभीरता से स्वीकारें। तो बहुत बड़ा साक्षात्कार था महाराज जी के लिए। Thank you so much, Guru. Yes, Prabhupada wanted this Krishna consciousness movement to be spread all over the world, as Lord Chaitanya predicted. And he also wanted to completely change the whole orientation of the world culture from sense gratification to pleasing Krishna. And he was convinced that this will happen. And we should be convinced also that this will happen. We just have to understand that in this one lifetime, we can do tremendous amount of service if we become serious to follow all the rules and regulations of Krishna consciousness. And please Prabhupada, by book distribution, by preaching, by opening temples, by having festivals, and just being very kind and gentle and loving with people, the common people, the ones that are suffering the most, then we can make this whole world Krishna conscious.
प्रभुपाद जी चाहते थे कि जिस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण भावना दिया है तो वो संपूर्ण विश्व भर में वो फैले और विश्व भर की जनता जो है उससे लाभ प्राप्त करे, और जो सारा विश्व एक भौतिकतावादी संस्कृति को अपनाए हुए है वो उनका जो देखने का नजरिया है, जो तरीका है वो बदले और वो सब भौतिकतावाद से बाहर निकलकर कृष्ण भावना में और कृष्ण सेवा में नियुक्त हो जाए। इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हम प्रचार करें, पुस्तक वितरण करें, इस प्रकार से प्रभुपाद जी की सेवा करें, मंदिर बांधे और विशेष करके बहुत ही दया भावना के साथ और प्रेम के साथ सारे जीवों के साथ व्यवहार करें, क्योंकि ये जीव जो है इस संसार में बहुत दुख में है और कृष्ण भावना की उन्हें बहुत आवश्यकता है। Thank you very much, Guru Maharaj. Hare Krishna. Thank you so much, Guru Maharaj. Hare Krishna. So we are very grateful to you, Guru Maharaj, for accepting disciples from our congregation in Aurangabad. And I'm very grateful to you personally too for all your love and kindness that you have showered on me personally. And I pray that I would be able to serve you and serve your instructions, and also would be able to serve all these devotees who have taken shelter of you. We'll work together. Because yes, Guru Maharaj, I would not want any other choice. Cooperation is a sign of spiritual life. In the spiritual world, people cooperate with Krishna and they do miraculous things. And if we cooperate together and with all the other devotees, all the other gurus also, we'll be able to do wonderful things. Hari Bol. Thank you so much. Hare Krishna. Thank you. And thank everybody there on my behalf. Hare Krishna. Hare Krishna. His Holiness HariVIlas Maharaj ki Jai. 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 Hari Bol. So Guru Maharaj, now we'll have the yajna. So please take rest. Okay.